मे बी नाबार्ड इज क्योंकि वो एग्रीकल्चर या रूरल सेक्टर को देख रहा है, तो व्हेन आई गेट सिलेक्टेड तो मेरा जो पोस्टिंग है ना वो रूरल एरियाज में ही रहेगा हमेशा। हाउ डज नाबार्ड अर्न पैसे? इतना पैसे देते तो हैं, स्टेट्स को दिए, एसएचजीज को दिए, खुद कहाँ से अर्निंग होती है? वेयर डू दे गेट पोस्टिंग यूजुअली? एक कहीं ना कहीं स्पेशली गर्ल्स को मैंने देखा रहता है कि विल आई गेट माय होम स्टेट और नॉट, यार मुझे कितनी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स मिलेंगी। Hello everyone, myself Ritika and I welcome you all to Adda 24/7. Today I have with me a very important personality who is going to guide you about NABARD. Everything about NABARD आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में। तो लेट्स वेलकम मिस्टर शालिग्राम ताइडे सर। Thank you Ritika ji, and I'm extremely grateful that you have given me this opportunity to explain about the institution for which I have worked, or rather enjoyed working for that institution. That is NABARD. Right. So we are humbled to have you sir, and मैं थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन दे देती हूँ because you have a rich experience of working in NABARD. So Shaligram Taide sir is a retired GM from NABARD. He has worked for more than 30 years in NABARD, and if we see his total working experience, तो वो more than 35 years का जाएगा। तो sir has while working in NABARD इन्होंने बहुत सारी states में काम किया है। जैसे हम डिस्कशन कर रहे थे तो मुंबई से लेके छत्तीसगढ़ तक सर सभी स्टेट्स में आपने काम किया है। ऑफ कोर्स वेरियस आपके जो पोस्टिंग्स हैं, पोस्ट जो हैं अलग अलग रही होंगी। तो आज उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम चाहेंगे कि आप हमारे जो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो नाबार्ड के बारे में जानना चाहते हैं, नाबार्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको गाइड करें सर। या सो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि नेचुरली बिकॉज आई हैव स्पेंट 35 इयर्स ऑफ माय लाइफ इन नाबार्ड, सो आई लाइक द इंस्टीट्यूशन। कुछ तो होगा इसमें जिसकी वजह से मैं इतना खुश हूँ ज़िंदगी में इस इंस्टीट्यूशन के साथ काम करने की वजह से। सो नाबार्ड इज़ अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन। मतलब बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस होती है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है तो डेवलपमेंटल नहीं होती, डेवलपमेंटल होती है तो रेगुलेटरी नहीं होती। एक नाबार्ड ऐसी इंस्टीट्यूशन है कि इसमें दोनों तीनों फंक्शंस एक जगह आए हुए हैं। ये डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशन भी है, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी है, और ये टू अ ग्रेट एक्सटेंट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन भी है। कैसे? तो हम थोड़ा इसके ऊपर मतलब चाहेंगे कि वी विल हैव अ लिटिल बिट डिस्कशन ऑन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाबार्ड इज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेफिनेशन। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने DFIs की डेफिनेशन से DFIs बना के रखी है, उसमें नाबार्ड इज कंसिडर्ड एज अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सो डेवलपमेंट नाबार्ड क्या करती है? सबसे पहले इट्स द कोर, इट्स द USP ऑफ नाबार्ड। देयर आर umpteen number of financial institutions in this country, but then NABARD, what separates NABARD from other financial institutions is being a developmental institution. किस तरह की डेवलपमेंट करती है नाबार्ड? सो नाबार्ड की डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स जो है वो 3 हिस्सों में बट जाते हैं। सबसे पहले तो ये फार्म सेक्टर का डेवलपमेंट, नॉन फार्म सेक्टर का डेवलपमेंट, एंड देन डेवलपमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। जो रूरल क्रेडिट की हमारी इंस्टीट्यूशंस है, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई, जैसे ग्रामीण बैंक्स हो गई, नो इवन कॉमर्शियल बैंक्स की भी जो रूरल ब्रांचेस है उनके लिए कुछ रोल्स या कुछ उनका असिस्टेंस या कुछ डेवलपमेंटल इनिशिएटिव्स। सो एक स्तर पे तो ये होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द रूरल एरिया, कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स एंड द रूरल एंड सेमी अर्बन ब्रांचेस ऑफ द कॉमर्शियल बैंक। तो इनके लिए हम इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट करते हैं। Then NABARD what does is farm sector development. There are a whole lot of activities under the farm sector development. फार्म सेक्टर डेवलपमेंट में ये है कि कृषि की जो उत्पादकता है खेती की वो किस तरह से बढ़ाई जाए। देन नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग किस तरह से की जाए, किस तरह से उस फार्मर को रेडी किया जाए कि वो नई और उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सके। एंड द थर्ड थिंग दैट इज नॉन फार्म सेक्टर। जो हमारी ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो बेरोजगार लोग हैं, इन ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार लोगों को, अनएम्प्लॉयड लोगों को एक गांव से ही निकलकर कोई रोजगार मिले, तो उनका स्किल अपग्रेडेशन है, उनके एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, उनको टेक्निकल स्किल्स है, ये सब देने के लिए देन उनके माइक्रो एंटरप्राइजेस सेटअप करना है। इन सब चीज़ों के लिए नॉट ओनली नाबार्ड गिव्स the training and skill development kind of things, NABARD also gives the financial assistance, not only for training and skill development, but through the banking sector, it gives the
the financial assistance for starting the micro enterprises at the grassroots level. Right. So हमारा डेवलपमेंटल रोल जो है नाबार्ड का, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर इसमें जो आपने इतने बहुत ही अच्छे से आपने 3 डिवीजन करके हमें बताएं कि दैट इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इंस्टीट्यूशंस को देखना है, नॉन फार्म सेक्टर को भी आपने बताया, एंड आई थिंक उसमें नाबार्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। हम देखते रहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कितना नाबार्ड प्रमोट करता है, FPOs को। लेकिन ना इसी पॉइंट पे ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्वेश्चन क्योंकि हमारे पास बहुत ऐसे एस्पिरेंट्स आते हैं जो ये सोचते हैं कहीं ना कहीं मन में कि मे बी नाबार्ड इज, क्योंकि वो एग्रीकल्चर या रूरल सेक्टर को देख रहा है, तो व्हेन आई गेट सिलेक्टेड तो मेरा जो पोस्टिंग है ना वो रूरल एरियाज में ही रहेगा हमेशा। ये एक काफी बच्चों के मन में रहता है सर। एक्चुअली ये थोड़ा सा मतलब मिसकंसेप्शन है अबाउट नाबार्ड। नाबार्ड इज अनलाइक द कमर्शियल बैंक्स और अदर इंस्टीट्यूशंस, नाबार्ड इज हैविंग ओनली 27 रीजनल ऑफिसेस and all the regional offices, 27 regional offices, they are at the respective state capitals. तो ये तो आपके जो हमारे जो कैंडिडेट्स है वो मान के चले कि हमें स्टेट कैपिटल में ही रहना है। हाँ. So they will never be, no, they will, I cannot say categorically they will never be, but yes, उनको most part of their life, except 5 or 6 years or 7 years, they will be always, they can rest assured, as of now, that they will be posted in the state capitals. 27 state capitals है, तो 27 state regional offices है, तो 27 state capitals में रह सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये है कि जो 5 या 6 साल का पीरियड होता है, एक रूरल पोस्टिंग कंपलसरी है नाबार्ड में, मोस्टली कंपलसरी है नाबार्ड में, एंड दैट गिव्स यू न्यू पर्सपेक्टिव टू थिंक आल्सो, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जब आप स्टेट कैपिटल्स में रहते हो तो आपका जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है या जो ग्रामीण एरिया है, उसके साथ में आपका इतना अच्छा रैपो नहीं बनता, उसको आप समझ नहीं पाते हो। यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द रूरल पॉपुलेस फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। तो हम यदि वहां रहे 5 साल तो हमें समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग करने में, बिकॉज वी स्टार्ट गेटिंग बिलोंगिंग टू दैट पर्टिकुलर थिंग। सो ये मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। आई मीन ये परसेप्शन हमें थोड़ी नाबार्ड के बारे में चेंज करनी पड़ेगी। बीइंग अ डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बीइंग द अपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, it is first of all NABARD is a financial institution. Then only the developmental and regulatory things will come. यदि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसलिए है कि हम यदि 4 पैसे कमाएंगे नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा, तो हाउ वी विल डू द डेवलपमेंट, फ्रॉम वेयर वी विल डू द डेवलपमेंट? आई मीन इफ इट इज वी हैव टू डू सिंपली डेवलपमेंट, देन वी आर अ गवर्नमेंट. No, government is having unlimited amounts of funds, and they are having their sources. So we have to earn the profit and then utilize that profit for development. So NABARD is a development financial institution. 27 के 27 ऑफिसेस हमारे स्टेट कैपिटल्स में है, तो कैंडिडेट्स कैन रेस्ट एश्योर्ड, they will be taken care of, they will be at a good places. तो इतने अच्छे से सर you have explained this thing, and I think this logic also you have given कि if you get one posting in rural areas, तो of course जिस इंस्टीट्यूशन में आप हो, जो वो काम कर रहे हैं, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए वो जरूरी भी है। एंड आई थिंक सर जब आप नाबार्ड में चले जाते हैं, यू सी द वर्किंग, तो यू वुड ऑल्सो वांट कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ हाउ वी आर गोइंग टू वर्क, राइट? तो इसमें कोई आपको डरने की जरूरत नहीं है, जो बच्चों को डर रहता है मन में कि पूरी लाइफ कंटिन्यूअसली एसी ऑफिसेस में रहने के बाद में लगेगा कि नो, आई वांट टू सी द रियल पीपल, आई वांट टू फील देम। हाँ, जो भी, बिकॉज मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, व्हाट हैपेंस इज इट विल कम फ्रॉम योर इनर सेल्फ कि मैं रूरल में जाऊँ, मेरा पोस्टिंग रूरल में हो। क्यों? क्योंकि मैं जो सर्कुलर्स या इंस्ट्रक्शंस या जीआरस या जो भी चीजें निकालूंगा, जो गाइडलाइंस बनाऊंगा ग्रामीण क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए, तो उसका क्या असर हो रहा है, ये मुझे सिर्फ मॉनिटरिंग रिपोर्ट से पता चलेगा, राइट? ये मुझे सिर्फ फोटोग्राफ से पता चलेगा, ये मुझे सिर्फ वीडियो से आज के जमाने में पता चलेगा। उन लोगों की क्या परेशानियां हैं, या मैंने जो कुछ भी अच्छा काम किया, तो मैं कागज पे नहीं, मैं हकीकत में देखना चाहता हूँ, राइट? सो इसके लिए वंस यू गो ओवर देयर, तो आपको लगता है कि नहीं, मैं तो जाना चाहूंगा, आई हैव डन सम प्रोजेक्ट फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट, आई वांट टू गो एंड सी। कितनी अच्छी बात कही सर ने। दिस हैपेंस, आई कैन से, व्हेन यू लव योर वर्क। और सर एज ही सेड कि ही हैज स्पेंट more than 30 years नाबार्ड में, and today he is here नाबार्ड के बारे में आपको बताने के लिए। तो आप समझ सकते हैं नाबार्ड का इम्पैक्ट कितना रहा होगा सर। तो सर आप बता रहे थे जैसे रोल्स के बारे में, तो इसमें एक चीज़ और है, जैसे आपने बताया कि ये जो आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नाबार्ड, इसमें ना एक और पॉइंट है जिसपे हमें भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के, और उनको डाउट रहता है कि हाउ डज नाबार्ड अर्न
पैसे, इतना पैसे देते तो हैं, स्टेट्स को दिए, एसएचजीस को दिए, खुद कहाँ से अर्निंग होती है इनकी? तो अगर यू कैन शेड लाइट ऑन दैट थोड़ा सा. See, NABARD basically when it was formed, no, after getting separated from the Reserve Bank of India, we got some funds in inheritance, but वो बहुत कम रह गए अभी, मतलब means वो तो static थे, वो वहीं पे that amount has stopped over there only. Now we are a Government of India owned organization, so Government of India contributes to our share capital. So 17,000 crore odd is the share capital contribution from the Government of India. Then over a period of last 35 or say 37, 40 years of NABARD's lifetime, it has earned profits, and out of those profits transported to, I mean those profits got transferred to reserves. So we have reserves of around say 49,000 crores. Okay. So totally our own funds are approximately 65,000 crores. Our net worth is 65,000 crores. And like any financial institution, it will have the funds mobilized from the market. So funds get mobilized from the market, and then we mobilize a lot of funds from the market. Every institution mobilizes funds from the market. Right. The banks are mobilizing the deposits ultimately from the consumers, and then they are lending. I mean, that is the job of any financial institution. So in the same way, against whatever net worth or own funds that we have, we mobilize the rest of the funds from the market and put them again in the give to the institutions for giving to the borrowers in the rural areas and the farmers and the other people. So based out of this only, we are able to mobilize the funds, and these are the sources. Right. And then there are some specialized sources also. I mean, supposing to be specific, supposing NABARD's balance sheet is of say 8 lakh crores. So we are having only barely 65,000 crores of funds of our own in NABARD. So rest of the funds we are borrowing, or some of the funds have been placed by different institutions with NABARD. So from time to time there have been various funds created for specific purposes. The first and the foremost is Rural Infrastructure Development Fund. Madam, whenever you were saying, Ritika ji, that you are giving to the state government. So mostly we are giving out of this Rural Infrastructure Development Fund. So whenever the banks are doing the lending, they are supposed to lend to the priority sector. And whatever gap or deficiency is there in the deficit is there in the lending to the priority sector, that amount that deficit amount is coming to NABARD. It is going to SEBI also. So RBI decides it, and Government of India decides it. So we get under RIDF some amount, and that's a good amount. And then what we around 80-90,000 crores rupees we get from RIDF. And another thing is there are different funds with NABARD. Like Farm Sector Development Fund, Farmers Technology Transfer Fund. All these funds, most of these funds have been created out of the profits of the previous so many years. So these are the funds we are having. But yes, basically our fund mobilization is from the market. Right. But then that is the challenge before the new generation to come to NABARD and make it profitable further. How I will say, because you are mobilizing the funds from the market at market rates, and you are giving again to the financial institutions at slightly lesser than the market rates. That is why they are coming to you. Otherwise, banks are having plenty of funds with them. We are giving them a little bit lesser than what they are having, and because of that, and out of that, we are earning some profit also. Right. So, like they say, it is really a little bit of a magic that we do. Challenging job it is, but challenging job. NABARD has been doing it really well, sir. Jitna we understand. This year's profit is 5,300 crores. After serving the rural populace, after serving the Kisan of this country, the farmers, the rural, the self-help group women and all, then if we are still able to mobilize the profit, that is a good thing, I think. Which is actually a big thing, actually, sir. अगर हम देखें तो the way NABARD has been working since its inception till now, RBI के department से जैसे एक अलग बनाया गया NABARD, and today it is doing really well in all the sectors. तो ये जो सर ने एक्सप्लेन किया है, आई थिंक दिस सम्स अप जो आपका एक कंफ्यूजन रहता है ना अबाउट द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ नाबार्ड, क्योंकि कहीं ना कहीं पीपल आर कंफ्यूज्ड अबाउट एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए कुछ करते हैं, रूरल के लिए करते हैं, बट एक्चुअली इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. हाउ इट वर्क्स, हाउ इट अर्न्स, सर ने बहुत राइट. मैं और एक थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि नॉट टू हैव दिस परसेप्शन इन माइंड दैट नाबार्ड इज डूइंग समथिंग ओनली फॉर द सेक ऑफ एग्रीकल्चर
agriculture, and when you take up a career in NABARD, you will be doing exclusively for agriculture only. Of course, you will have to do it. आपको करना ही पड़ेगा, आपके ऊपर आएगा, मतलब आपको करना होगा, and it will be a part of your job. But then there are different choices. We have some 32 departments, and every 4 years, 5 years, you will be in different departments. So after 35 years, you would have ended up working in not more than 10 or 12 departments. Right. Isn't it? And supposing if you are a finance person, for them, we also have a place, and they will get a very good career opportunity, because NABARD is having investment portfolio of around 48,000 crores. So if you get posted in a funds and accounts department, no funds department or a financial resources department, then you will get an opportunity, to utilize this fund and maximize profit out of these investments. Right. So some of those who are investment minded and good at this, then some of you can also be very useful if you have a little bit shaky mindset towards agriculture. Then you can say that I will be in the risk management department. You get a posting in the risk management department. You can turn out to be a very good risk manager over a period of time. So there are different, I think, departments and different functions of NABARD. And let me assure the candidates that NABARD is having functions and workings, when we call it everything under the sun. Everything under the sun. So wherever you are wanting to work, you will get an opportunity. Right. So wonderfully explained. I'm so glad we had this discussion, sir. क्योंकि ये वो doubt है जो बच्चों का बहुत आता है, because students, as you know, are preparing for, जैसे RBI का भी एग्जाम रहता है, SEBI का भी रहता है, तो कहीं ना, और मुझे अच्छा नहीं लगता जब मैं सुनती हूँ, उनको लगता है कि RBI में तो हम कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड काम करेंगे, SEBI में भी हमें पता है कि हम क्या करेंगे, NABARD में तो मेरी काम ही नहीं आएगा what I'm going to do. तो सर ने आज आपको बहुत अच्छे से समझाया है कि your education, your interest is also going to be utilized NABARD में भी. And if you permit me, I will again say, see, after working, you have seen best of the people working in Chase Manhattan or Bank of America and all that, and even in technology sector, like supposing Jeff Bezos is there, or Microsoft, Melinda and Bill Gates are there. Then they also say we will work for the SHGs. Bill Gates and Melinda Gates Foundation, they say, we want to work for the poor, and so and you just see what kind of how colossal professionals they are. Right. And they feel at the end of the day, we want to work for the rural poor. So I am very sure that even if you are trying to be a finance professional, after 10-12 years, you will feel, I want to do something for the society. Right. Wonderfully explained, sir. बहुत अच्छा लगा ये discussion करके. So this is, I think, काफी we have discussed about NABARD, about its roles, different roles it has. Sir, can we also discuss about NABARD Grade A officer, because the examination students are taking is for Grade A officer only, which is assistant manager. So this Grade A, assistant manager, apart from this, students do not know much about the profile of the officer, that what am I going to do there? Thoda sa, if you can shed light on that part as well. See, Grade A officer, I will say it is a bedrock of our institution, because anything, any proposal, any letter, anything to initiate, it will land up on the table of a Grade A. He has to take a view. What are the prevailing instructions? What are the guidelines? What is the framework? And based on that, he has to examine that. And he has to put up, and he has to give his views. So anything that the institution does, first of all, it will come on the table of a Grade A. Okay. So you have to consider that the biggest problem in the country will first come on your table. So you should be very lucky for that. Supposing Pradhan Mantri Awas Yojana, the state governments are finding it difficult to mobilize the resources for 40% share of the PMAY Gramin for giving houses for the rural poor. And the state government gives a proposal to NABARD that yes, we want to have a funding from NABARD. So first it will come to your table, and you are a Grade A officer, and from you it will go right up to the business sanction committee headed by the Honorable Chairman Saab of NABARD and all. So what you have the privilege to contribute to the nation building. Supposing 5,000 houses or 5 lakh houses are to be built, then that proposal is coming to you. So you will be feeling so privileged in this world that you are handling the project
or the proposal which is going to give houses to the rural poor, not only 1 or 2, 5 lakh, 1 lakh, 2 lakh, something like that. So, and it starts with your comment, and your name will always be there in the office note. So you can contribute that way. So grade A officer, anything that comes to NABARD first comes to the grade A, and grade A has to take a wholehearted view, the holistic view with framework, guidelines, circulars and everything. And then it goes on getting refined over the hierarchy. Achha. So NABARD is having, suppose say grade A, grade B, grade C, grade D, grade E, and then grade F. Grade F is at the state level, he is in charge of the office that particular state and regional office. And then at head office level, it is the departmental in charge. So Department of Refinance is there, or Department of State Projects is there, State Projects Department is there. So he is in charge of that. So from A, B, C, D, E, F, it goes on getting refined. So it gives you the freedom that you need not be all that worried that you have committed a mistake or one of your ideas is wrong, not implementable. You being a person, you have a freedom within the framework to put your creativity at work and try to make that proposal happen. Okay. So that everything comes to your table, and your role. And best thing is, NABARD is a very democratic kind of organization. If a grade A officer has written something very good about that project to get it sanctioned, he has pointed out some very good points, or suppose project is not at all viable and he has written very clearly that these are the lacunas, these are the problems in this. And grade B will say yes, grade C will say no, grade D will say yes. No, hierarchy, everybody will say no, have some different kind of views into that. But when it goes to the Chief General Manager, the head of the department or the officer heading the regional office, then he reads from A to E, whatever everybody has contributed. And if he likes the point of grade A, then he will say, yes, I accept this suggestion given by the grade A. And the beauty of this organization is, when the grade A officer's point has been liked and the proposal has been liked by the officer in charge, and it file comes back, then nobody will have a grudge against you. In any other organization, I should not say this, but in any other organization, they will say, if the junior most fellow's suggestion is accepted, then what for we are here, isn't it? Right. But then this is the organization which will applaud you, will respect you, will be very happy कि अरे एक छोटा बच्चा था यार, उसने देखो कितना अच्छा काम किया कि उस बच्चे का proposal इतना सही बना. So ये freedom, it's a very democratic organization and everything is open. Right. तो right from being a grade A, जब आप select हो जाते हैं, तब से you are playing a very important role. आपको चाहे वो proposals आ रहे हैं, उनको rejection हो या selection हो, you are going to play an important role there, yes, right? उसके बाद as you said, grade B, grade C, grade D, ऐसे promotions आपके होते रहते हैं. So sir, when a person is selected as grade A, हमने देखा कि किस तरह का उनका काम रहेगा. Like for example, institutions are coming to them कि कोई project लेके या कोई government का project है, तो they are going to be the first, हम कह सकते हैं line में the first person जो उस सबको अच्छे से देखेंगे, and they might prepare a report and present to अपने जो. And they get a lot of time. Of course. Because the more up the ladder you climb, you have lesser time. Because your area of work is broadened. Right. Here you are focusing on that particular activity only. You are focusing only on roads and bridges. You are focusing only on the self-help groups. So you get more of time. So because of that, you get to see more instructions, more perspectives, more views. No, you have time for that. Right. So sir, जैसे grade A है, so what do you think कि जो एक promotion, we can say, the promotion opportunities, वो कितनी frequent है, या क्योंकि people have this notion in mind कि am I going to be stagnant there? ऐसा तो नहीं होगा कि मेरा जो role है उसमें I'm going to, let's say I'm selected today as grade A. So today students who are aspirants, they want to know कि what will be my future after 15-20 years? Where will I land? What will I get today is one thing. लेकिन अब ये भी क्लैरिटी चाहिए ना थोड़ा सा कि आने वाले सालों में मुझे कहाँ प्रमोशन मिलेगा या कैसे कैसे एग्जाम्स होंगे, कुछ ऐसा सर जो आप बता पाएं. इसमें होता ये है कि करियर प्रोग्रेशन ये इंस्टीट्यूशन का भी जिम्मा होता है.
isn't it? If the institution allows people to get stagnated at one place, so that institution cannot make progress, isn't it? And NABARD being a very vibrant, very democratic kind of organization and devoted to the development of the nation, it wants to keep its staff motivated. So यहाँ पे promotion की बहुत सारी opportunities है. Rather, NABARD help करती है सबका कि भाई they should get promoted and they should climb up the ladder. So पहला promotion मेरे ख्याल से 4 या 5 साल के बाद आता है. From there you become grade A से B बनते हो. Grade A और B में NABARD में ज़्यादा फर्क नहीं है. Because grade A officers है, grade B भी officers है, so that hierarchy is not very strict. कि ग्रेड ए का एक ग्रेड ए के साथ में ग्रेड बी रहेगा ही उसके ऊपर. नो, इट इज नॉट नेसेसरी. मोस्ट ऑफ द टाइम ये भी होता है कि ग्रेड ए ग्रेड बी सेम पैरेलल लेवल पे काम करते हैं. इसका डेस्क अलग रहता है, उसका डेस्क अलग रहता है, दोनों की एरिया ऑफ एक्टिविटी अलग रहती है. एंड इन दैट डिपार्टमेंट, इन दैट सेक्शन अलोन, एक इसको नॉर्थ इंडिया के प्रपोजल्स है, तो इसको ईस्टर्न इंडिया के प्रपोजल्स है, तो इसको साउथ इंडिया के प्रपोजल्स है, 3-4 स्टेट्स के, तो समथिंग लाइक दैट. सो ग्रेड ए एंड ग्रेड बी देयर इज नो मटेरियल डिफरेंस इनटू दैट. ओके, बट ग्रेड बी जब आप होते हो तो ग्रेड बी के बाद में देन यू बिकम अ ग्रेड सी. So I think roughly first 5 years is grade A to grade B. Then another 5 to 6 years is grade B to grade C. Then from grade C you start coming into your own. आपका personality जो है 10 साल 11 साल के बाद में एक उसमें एक आयाम जुड़ना शुरू होता है personality में. You get noticed. You get to develop your viewpoint. You get to develop your expertise. You get to create your image of your own. कि ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़का बड़ा इनोवेटिव काम करता है, ये बहुत मेहनती है, इसका रिस्क मैनेजमेंट में एक अच्छा है, इसका अप्रेजल में इसकी मार पकड़ बहुत अच्छी है, ये डेवलपमेंटल फंक्शंस में बहुत अच्छा काम करता है, इसको रूरल इंडिया बहुत अच्छा आता है, इसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा आता है, इसको फंड्स मैनेजमेंट. आई मीन एक आदमी के बारे में एक ऐसी इमेज बन जाती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 10-11 साल के बाद में. सो जब आपके व्यू पॉइंट्स फिक्स होते हैं, आप भी थोड़े से मैच्योर हो जाते हो, तो आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हो आफ्टर 10 और 12 ईयर्स. सो बिटवीन ग्रेड बी 5-6 साल के बाद में टू ग्रेड सी, तो ग्रेड सी होने तक आपको ग्रेड सी के बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है. डिस्ट्रिक्ट में बिकॉज यू हैव लर्न विद द इंस्टीट्यूशन फॉर 10-12 ईयर्स, सो जो कुछ भी आपने कागजों में देखा है या विजिट्स में देखा है गाँव की और इसकी, सो अभी आपको मौका मिलता है कि ये सारी चीजें अब आपकी बहुत आपने कर ली ऑफिस में एयर कंडीशन में बैठ के, तो आप थोड़े मैदान में आइए. Isn't it? क्योंकि नए को मैदान में भेजेंगे तो ही विल नॉट बी, बेचारा घबरा जाएगा. सो 10-12 साल के बाद में इंस्टीट्यूशन इज देयर टू बैक यू अप, लेकिन आपको पानी में उतार दिया जाता है कि आप अकेले हो डिस्ट्रिक्ट में. एक डिस्ट्रिक्ट है, district magistrate hai, he is having a whole paraphernalia and machinery with him. Right. No, CEO Jilla Parishad is hai, he is having 5,000 employees with him. And then district agriculture, the superintending agriculture officer hai, he is having another 2,000 officers with him. And here is an NABARD assistant general manager, which we call as a district development manager in the district. And he is not having an employee in the assistant. So you have to throw, and then you are thrown into the water. एंड देन आपको सीखना पड़ता है कि मैं कैसे तैरूं. बट होता क्या है कि जब आप वहां जाते हो तो आपको तो रहना ही है वहां पे. लेकिन आप धीरे धीरे आपको एक क्या चेंजेस लाने चाहिए. हर एक आदमी का 10-12 साल में एक एरिया ऑफ एक्सपर्टाइज तो होता है. मेरा एक्सपर्टाइज सपोज फॉर एग्जांपल किसी XYZ का यदि किसान क्रेडिट कार्ड है, तो मैं ये चाहूंगा कि अरे यहाँ किसान क्रेडिट कार्ड में ये खामियां हैं, ये इस तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, किसानों को इस तरह से क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है. या मेरा एरिया सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का है, तो मैं ये कहूँगा कि मैंने तो ये सीखा है, इंस्ट्रक्शंस तो मैंने ये देखा है, ये है, ऐसा है, मुझे क्लैरिटी है थियोरेटिकल लेवल पे, बट प्रैक्टिकल हमेशा जैसे हर जगह होता है कि प्रैक्टिकल कुछ अलग ही होता है. तो प्रैक्टिकल में मैं देता हूँ, तो देन आई कैन गो एंड टेल देम कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ. देन देयर आर सो मेनी बॉटलनेक्स. गांव में ग्रास रूट लेवल पे ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, ये इंस्ट्रक्शंस इंप्लीमेंट नहीं होती. देन कुछ चीजें होती है जो सर्कुलर्स में के हिसाब से हो ही नहीं सकती इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से. सो तब आपको कुछ वाया मीडिया रास्ता निकालना पड़ता है. वो इंस्ट्रक्शंस चेंज करने के लिए एक फीडबैक रीजनल ऑफिस को देना पड़ता है, हेड ऑफिस को देना पड़ता है. वो इंस्ट्रक्शंस भी चेंज होती है, तो सिस्टम में बदलाव आता है. So you go there and whatever development you have been talking and writing about, you have to implement that. तो एक 10-11 साल के बाद में आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर होते हो.
देन अनदर 5-6 years, से 18 years से आप डेप्यूटी जनरल मैनेजर होते हो, तो डेप्यूटी जनरल मैनेजर विल हैव 2 or 3 एटलीस्ट AGMs अंडर हिम। द स्ट्रक्चर इस तरह से है कि वन AGM विल हैव 3-4 दैट काइंड ऑफ ग्रेड A ग्रेड B ऑफिसर्स देन AGM के अंडर में। और जब AGM में आप बीच में तो एक बार आप चले गए 5-6 साल के लिए, या ग्रेड B में आप चले गए, दैट इज एक रास्ता है, और फिर आ गए वापस। तो देन वंस यू बिकम अ DGM, देन DGM के अंडर में 2-3 AGMs रहते हैं, तो ही विल बी हैविंग सम 2-3 सेक्शंस DGM। Once after say 20 years of service, you become a DGM and you have become 2 years senior, then after 3-4 years of DGM, you become a general manager. And general managers में you will have 3-4 DGMs under you. So that kind of institution. And then जो पिनाकल रहता है आपके करियर का, उसमें होता है CGM मोस्टली। CGM एक एस्पिरेशन रहती है कि if I am from लखनऊ और if I am from झांसी, मेरा एक जिंदगी का ख्वाब रहता है एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग नाबार्ड कि मैं स्टेट का इंचार्ज बनूं, पूरा उत्तर प्रदेश का इंचार्ज बनूं, पूरा महाराष्ट्र का इंचार्ज बनूं। सो दैट पार्ट ऑफ थिंग कम्स टू यू। पहले तो बहुत सारा स्टैग्नेशन था, बिकॉज नाबार्ड में 1983-84 में जब रिक्रूटमेंट हुआ था, पहला रिक्रूटमेंट नाबार्ड बनने के बाद, तो चूंकि नाबार्ड नया शुरू हुआ है तो सब 800-900 लोगों को एक साथ लिया था, तो सारी एक ही बैच थी, तो उस वजह से थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ गया था, बिकॉज किस किस को प्रमोट करोगे, तो 800 में से आप 50-100 इस तरह से प्रमोट करोगे तो 8-10 साल नंबर आने में लगते थे। वो सिचुएशन अब खत्म हो गई है। नाउ रिक्रूटमेंट इज एवरी ईयर, सो प्रमोशन हैज बिकम इजी, सो अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग फेयरली वेल, इजीली। हर एक कैंडिडेट जो एंट्री करता है तो पहले तो ये सोचता है कि मतलब उसको ये एस्पिरेशन ही नहीं होती कि मैं चीफ जनरल मैनेजर बन पाऊंगा, मैं स्टेट का इंचार्ज नहीं बन पाऊंगा। आज के जनरेशन में शायद होगी, क्योंकि उस वक्त जब आए थे लोग 84 में या 84 में जब आए थे नाबार्ड में, तो तब तो सोचा नहीं था। तब लगता था कि स्टेट इंचार्ज ह्यूज, बहुत बड़ी हस्ती है, अभी भी है। So now that aspiration is there. So you by the end of your career, say if the retirement age is 60, so around 50 के आसपास आप चीफ जनरल मैनेजर बनना शुरू होते हो आज के पार्लेंस में। So chief general manager I think is a huge post. If you become a chief general manager, it's a huge post because each chief general manager is having around 15-20,000 crores का उनका लोन पोर्टफोलियो होता है, छोटे स्टेट का। बड़े स्टेट में तो 50,000 करोड़ भी हो सकता है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है, 50,000-60,000 करोड़ का भी पोर्टफोलियो हो सकता है। यू हैंडल दैट पोर्टफोलियो। अदर देन आई मीन दिस इज अगेन सेकेंडरी, दैट लोन पोर्टफोलियो एंड हाउ मेनी थाउजेंड क्रोर्स इट इज। You talk with the chief secretary, who is the senior most IAS officer in the state. बिल्कुल। You get a fair amount of opportunity to interact with the chief minister. The different ministers having rural development minister, the public works department, that PWD minister. So whatever developmental initiatives they want to take, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए कुछ करना है, रोड्स के लिए कुछ करना है, डैम्स के लिए कुछ करना है, प्रोडक्टिविटी के लिए कुछ करना है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर। सो ये सारे जो डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं सेक्रेटरी लेवल के, उनके साथ में आपका बहुत क्लोज इंटरेक्शन है, एंड यू आर इनटू दैट टॉप सर्कल इन द स्टेट कैपिटल। और एक मतलब एंड देन यू आर लुक्ड अपॉन एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, because most of the time the problem is of increasing the productivity, bringing a change at the grassroots level, and because NABARD having its unique system or unique way of functioning at the grassroots level through NGOs and all, you give them the new perspective. साहब ऐसा नहीं, ऐसा करने से हमने ये हमारे पायलट प्रोजेक्ट्स हैं। और नाबार्ड, एक मैं बीच में बताना भूल गया कि नाबार्ड मोस्ट ऑफ द टाइम एक पायलट प्रोजेक्ट नाम की चीजें करता है, इम्प्लीमेंट करता है। कोई भी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने से पहले पायलट बेसिस पे उस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करना होता है। देन दैट प्रोजेक्ट इज डन ऑन अ मैसिव स्केल, ऑन अ लार्जर स्केल। सो नाबार्ड के पायलट प्रोजेक्ट्स आप उनको बताते हो कि हमने एक जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में, एक ब्लॉक में ऐसा किया है, ये मॉडल हमारा सक्सेसफुल रहा है। जैसे वाडी मॉडल ऑफ नाबार्ड, ऑर्चार्ड डेवलपमेंट, नो, कि ट्राइबल्स को 1 एकड़ पे हम उनके आम के पेड़ देंगे या इमली के पेड़ देंगे, नो, या अमरूद के पेड़ देंगे, तो ऐसा क्रॉप जो उनको 20 साल 25 साल चले, तो जिससे उनको सस्टेनेबल 25 साल तक इनकम हो। एक मॉडल तो ये है कि फार्मर्स को दिया जाता है फसल के लिए ऋण,
नहीं, बट वो 1 ही साल के लिए या 6 महीने के लिए ही काम में आता है। लेकिन ये उनको एक उनको हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का एक दिया जाए इनिशिएटिव, तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उनके 1 एकड़ में लगाएंगे तो दैट ट्राइबल विल बी एबल टू नो गेट फ्रूट्स एंड इनकम फॉर 25 years ऑफ हिज लाइफ। सो एक काफी अच्छा, सो दिस काइंड ऑफ पायलट प्रोजेक्ट्स दैट यू इम्प्लीमेंट, वाड़ी हो गया, वाटरशेड प्रोजेक्ट्स हो गए, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स के आप बारे में उनको बता सकते हो कि हमारा सक्सेसफुल हुआ है, सिर्फ कागजी नहीं है, एंड सक्सेसफुल 5 साल के बाद हुआ है। आई मीन दैट एक्सपेरिमेंट हैज बीन कंडक्टेड फॉर 5 years, राइट, लोगों की एक्चुअल में इनकम बढ़ी है। सो इससे नाबार्ड इज लुक्ड आफ्टर एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। सो ये ग्रास रूट से ही है कि जब आप एजीएम या मैनेजर बन के जब आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर में जाते हो तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड सीईओ जिला परिषद लुक्स एट यू। अरे हमारे ये सरकारी, सॉरी मैं आई शुड नॉट से दिस, बट देन एक लिमिटेशंस होती है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, एक फ्रेमवर्क होता है उनका, वो उससे ज्यादा मतलब उनके लिए मुश्किल हो जाता है काम करना। सो दे कॉल नाबार्ड, अरे यार उसको बुलाओ, जरा उससे पूछो वो क्या क्या कर रहा है, इसमें क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। सो लाइक दैट नाबार्ड अबाउट द रोल ऑफ ग्रेड ए ऑफिसर्स, और आपने बहुत अच्छे से हमें काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। तो अगर अब हम बात कर रहे हैं ग्रेड ए ऑफिसर्स की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है इसमें सर, दैट व्हाट आर द पर्क्स और व्हाट इज़ द सैलरी जो मुझे मिलेगी एज अ कैंडिडेट जब कोई प्रिपरेशन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मन में बैक ऑफ द माइंड रहता है कि मुझे क्या अच्छा सैलरी मिलेगा, अच्छे पर्क्स मिलेंगे। तो अगर आप उसके बारे में हमें कुछ बता पाएँ अबाउट नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। सबसे पहले तो ये है कि नाबार्ड टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग, ऑल नो फिनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। सो इसमें मैं कैंडिडेट से ये कहूँगा कि इसमें सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बट देन अगेन इट्स अ मैटर ऑफ नो, मनी इज़ मनी, तो दैट मैटर्स इन लाइफ ऑल्सो, दैट ऑल्सो मैटर्स इन लाइफ। तो मैं कहूँगा कि टू बिगिन विथ अराउंड 95,000 की सैलरी मिलती है अब बिगिनर। सो ग्रेजुएट है तो उसको 2 इंक्रीमेंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, और ग्रेजुएट तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है ही। सो जो हमारा नाबार्ड का नया पे स्केल आया है रिसेंटली लास्ट ईयर, तो उसके हिसाब से दे गेट 95,000 रुपीज़ सैलरी, एंड उसमें से जो भी डिडक्शन होगा, सपोजिंग प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन है या फिर देन पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन का कुछ डिडक्शन है, बट दैट इज सॉर्ट ऑफ योर सेविंग्स ओनली। एंड देन 90 to 95,000 सैलरी बेस्ड ऑन वेयर यू आर प्लेस, क्योंकि हर जगह लोकल अलाउंस 1,500 रुपये 200 रुपये कम ज़्यादा होता है। बॉम्बे में है, मेट्रोज में है, नॉन मेट्रोज में है, तो उस हिसाब से। बट सैलरी इज इम्पॉर्टेंट, बट देन नाबार्ड टेक्स केयर ऑफ यू नो, एज आई सेड, हर एक एंगल से। सो यू गेट लॉट ऑफ अलाउंसेस एंड पर्क्स। मतलब नाबार्ड में काम करने से लोगों के बीच में सोशल एक्सेप्टेबिलिटी और दैट सेल्फ सोशल रिस्पेक्ट तो बढ़ता ही है, बट देन फाइनेंशियल रिस्पेक्ट ऑल्सो बढ़ता है, बिकॉज नाबार्ड नो टेक्स केयर ऑफ यू फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू फाइनेंशियली। जैसे कि मतलब यू गेट कन्वेंस, नाउअडेज कन्वेंस इज अ बिग प्रॉब्लम, यू एंड अप पेइंग लॉट ऑफ मनी ऑन नो commuting between one place to another. So you get around say 15-20,000 rupees, some 12,000 to 15 or 17,000 rupees for petrol or whatever conveyance thing, and then you get money for apart from conveyance all your monthly needs other than the salary. Like you get for mobile, you get 1,500 rupees something for your mobile recharge. And then you even get a maid salary of say around 2,000 to 2,500 rupees, something like that, for the maid's expenses. Then you get 1,500 rupees towards newspapers. So this is all taken care of. So then you get during office hours you are taking lunch, so you get some Sodexo coupons also. So I mean that takes care of your lunch also in the office. And if you are bringing your own dabba, then you can use those coupons at different kirana shop also. Right. That is also there, so you can have that also. So then other things are also there, like mobile and all that I have said. But then there are fixed expenditures which a person incurs, and from salary one finds it difficult. You are acquiring some assets. So for example,
after 1 or 2 years of service, after your confirmation and all, I think you get some 5 or 6 lakhs rupees for furnishing your house. So you can buy a sofa, you can buy a TV, you can buy a bed, or this furniture kind of a thing. So for furnishing it, you get once in 4 years some 5-6 lakhs rupees. Then you get major thing is LFC you get once in 2 years. So it is live fair concession. So you can take your family, parents included, dependent brothers, sisters also included. You can take them by air to anywhere in India. And so that LFC is there, FRSO is there. Housing loan you get at a very cheaper rate of interest. I mean, it is at least I don't know the exact percentage that they charge, but it is fairly below the market rate. That is a subsidized housing loan NABARD gives, and the amount is also good, 70-80 lakhs rupees, so where you can start your life by having some flat or something. Then you get a vehicle loan also, around 12 lakh, 15 lakh rupees, 12 lakh I think we used to get. So 12 lakh rupees housing this motor vehicle loan. So young chaps after 2 years of service, they also move into Honda City and that kind of thing. And above all these things, I think you get quarters. NABARD, all the places that NABARD is there, most of the places we have the quarters. Some of the places like Dehradun, because which is a new state, where the office was newly set up after creation of the state. So even there also we have the quarters. So all the places you get the quarters, and quarters are good, the community is good. Then the quarters are having all amenities like gym and garden and everything is there, social gatherings, hall and everything. So quarters you get. So these are the things that you get in NABARD. I think it takes care of most of the things. Even once in 2 years, once in a year, you get a money for briefcase, you get a money, for book grant scheme. So that you can update yourself, you can read the books, that habit can be inculcated. So you get book grant scheme thing is there. I mean, on the lighter side, I will say you get an entertainment allowance also, some 10,000-15,000 rupees, where you can entertain your business associates. I mean to say, supposing if you are working with a state cooperative bank, then you can entertain the cooperative bank people or whosoever you are interacting with in the process of your service. So you can entertain them. So for that purpose also you get the entertainment allowance. So you can go take them to the restaurants and all that. Some 12,000-15,000 rupees per year for the beginners. For the beginners. For seniors, it is a fairly high amount. So basically, whatever you have... And you will get senior one day. Definitely, as sir has told that already. So for a grading officer, all the perks, sir has told, the salary. So the point is, what we are trying to make, that NABARD is actually taking care of you really well. Yes. They are ensuring that you get everything, like every comfort. Even they are trying to provide you luxuries, so that you can do your work well, as you said. And one more thing I will add here, because NABARD takes care of yours financially, every aspect of your life or every aspect of your financial requirement, with the result that what happens is, I should not say this, the person doesn't look here and there for the extra money. That is why you will find NABARD is a totally transparent, honest, kind of organization. The culture here is totally transparent, culture here is so good. It is only because every financial need is taken care of by the institution. Once you reach around 50 years of service, 55 years of service, and your kids are going abroad for the education, you get a subsidized education loan also. Around say 30-40 lakh rupees you get for going over there. So it is, every aspect of life is taken care of.